Okay, now today we have a topic is en la escuela, in the school. आप बोलो, hoy es día de clase, hoy is today. Hoy is today, हम कहते हैं एल या एस, सेड conjugation which is s. Yes, yes. Hoy es día, día is my day. Día Hoy is es día de clase. day, clase, day is my off, clase is my class. Today is the class day, I'm saying. The day of the class. In Spanish, we have day of the class. So I'm saying, hoy es Okay. día de clase. Hoy, today, Es día de clase. día de clase. Como todas las mañanas, Marcos. अब जो como होता है like, como जैसे कि हम बोले जैसे कि इसको रिपीट करो लैंग्वेज को आप. Hoy क्या es है? día de clase. देखो, एक आप बोलो जैसे कि जैसे कि como, como, repeat after me, como Como. is like as, हम बोलते हैं जैसे कि that is Yes, como. बोलो, hoy es día de clase, today is the last day. Is it clear to you? Clear? yes. Now you are saying como, जैसे कि todas होता है all, todas, repeat after me, todas, every, all, las mañanas, we have morning, mañana. Marcos is the name of the person. Se levanta con sueño. Levanta क्या होता है? We have verb levantar, that is to wake up. Pen down please. Okay. We have, देखो ये verbs हैं आपकी. Levantar is my verb to wake up. Con sueño. Sueño क्या होता है? मेरी sleep, नींद, sleepy, sueño. Is it clear? Okay. Sueño. मैं कह रहा हूँ como todas las mañanas Marcos se levanta con sueño. बिल्कुल ध्यान से समझना. Como जैसे कि todas, every, todas. Repeat after me, todas. Todas is every. Las mañanas, every morning, जब मार्को उठता है, जैसे Mm-hmm. जैसे एवरी मॉर्निंग todas las mañanas मार्को जो है वो उठता है, गेट अप होता है, वेकअप होता है, से लेवांता विद, कौन होता है? विद द स्लीप, sueño. इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? Okay. तो बोलो फिर आप, como todas las Como, mañanas मार्को से लेवांता con sueño. बोलो आप इसको. como todas las mañanas, Marcos se levanta con sueño. अब इसको दोबारा रिपीट करो शुरू से. रिपीट करो. Hoy es día En de la, clase. Hoy yeah, es día en de la, clase. hoy es día Como, de clase. Como como todas todas las las mañanas, mañanas, Marcos se Marcos se levanta. levanta con sueño. Is it clear to you? Clear? इसको दोबारा रिपीट करो. सोचो इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है. अभी इसको रिपीट करो इन 2 लाइंस को. देखो समझ आ रहा है? Con sueño. क्लियर है? अब वो कह रहा है कि hoy tiene clase de matemáticas. Hoy is today. Hoy is Mm-hmm. today. Have you done tener verb? Tener is to have. Yo tengo, Yes, yes. tienes, él ella tiene. अब वो यही कह रहा है कि today he has, tiene, él ella tiene. He has, क्योंकि tiene जो conjugation है ये मेरी él ella की है, he की conjugation है. Clear? So वो कह रहा है कि hoy tiene clase de matemáticas. Today he has a math, English is ciencia and science class. So today he has math, English and science class. Is it clear to you? Tell me yes or no. Clear हुआ आपको? Yes, Ankit. अब कह रहे कि से विस्ते. विस्ते क्या होता है? अपने ऊपर ड्रेस पहनाना. ही गेट ड्रेस, बोलते हैं से विस्ते. से विस्ते, उसने अपना को ड्रेसअप किया. से विस्ते, से विस्ते. बोलो, he get dressed. Se viste. Se viste. Se viste. Se Yes. viste. Desayuna, उसने ब्रेकफास्ट लिया. Desayuna. Desayunar. Desayunar एक मेरी वर्ब है. पेन डाउन प्लीज. DESAYUNAR.
desayunar एक मेरी वर्ब है, to have breakfast. उसने desayuno किया, उसने ब्रेकफास्ट किया, have breakfast, desayunar. Y comienza, el comienza and he start. Comenzar भी a verb to start. Comienza and start. Comienza एक मेरी verb है. Comenzar basically मेरी verb है. Comenzar. C-O-M-E-N-Z-A-R. Pen down please. Comenzar एक मेरा verb है to start का. Is it clear to you? Clear, Hardik? Yes, Ankit. Y comienza and start el camino hacia la escuela. And he start the way to the school. Camino, way. Hacia la escuela. He start the way to the school. Is it clear to you? Is it clear to you? Then he's saying, se encuentra. We have verb encontrar. Encontrar एक मेरा full verb है. ये encuentra है ना? तो इसका जो full verb है, that is encontrar. E-N-C-O-N-T-R-A-R. Pen down please. Encontrar. अब आपको देखो वो क्या मिल रही है. encontrar. E-N-C-O-N-T-R-A-R. लिख लिया आपने encontrar? हेलो, Hello. लिख लिया आपने encontrar? Yes, yes. ओके. सो जो ये encontrar है बेसिकली दैट इज कन्वर्टेड होता है इसका yo encuentro. Encuentra. सो ये है he meets. Se encuentra con su amigo. He meet con with su his amigo friend Pablo. He meet his friend Pablo. Is it clear to you? Clear? बोलो आप इसको हार्दिक. Se encuentra con su amigo. बोलो आप प्लीज. Se encuentra con su amigo Pablo. Is it clear to you? Yes. Clear? Then he's saying los dos, the two, los dos, the two of them. One is my verb to go. One basically हमारा ना हमारा कौन सा ear conjugation है. One. You know one, VAN हमने ear conjugation किया है हार्दिक. Yo, voy, tú vas. Yes. Clear? Okay, next, los dos van juntos a clase desde que eran pequeños y siempre que. Acha, what is this? He's saying los dos, the two of them, go to the class together. Juntos a clase. Juntos is together. Juntos is together. A clase is class. The two of them go to the class together. Desde que, since. Desde que, since. ईरान हम यूज करते हैं वॉज वर्क के लिए. they were. ईरान होता है हमारा they were. desde que ईरान pequeños क्या था? छोटे. little. pequeños क्या होता है? pequeños little. समझ आ रहा है हार्दिक? pequeños. हार्दिक, can you hear me हार्दिक? Yes. वो तब से स्कूल इकट्ठे जा रहे हैं. खुंतोस. desde que eran pequeños, जब से वो छोटे थे, little थे. since they were little. desde que eran pequeños, desde que, since they were little. Y siempre and always, que pueden quedan, what is saying? And whenever they can stay. Kedar verb. लिख लो हार्दिक, भी a verb. Kedar, Q-U-E-D-A-R. Kedar is a verb to stay, very important. Poder, pueden, and can stay. हमने कहा ना poder verb. Yes. Can का P-O-D-E-R. Yo puedo, tú puedes. Clear? तो ये कॉन्जुगेशन जो हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो पिछला पूरा कौन सा अंकित कौन सा वर्ब बता रहे थे अभी? poder, P-O-D-E-R. poder. Yo puedo, tú puedes. जो हमने पिछले किया है पीछे. Yes. ER verb. Yo puedo, tú puedes, ella puede, nosotros podemos, podéis pueden. Do we pueden, can. They can stay
Para jugar, to play. Jugar is my verb to jugar is my verb to play. Jugar is my verb to play. Jugar. लिख लो. En el parque, in the park. Al football, to football, whatever is he saying. And always they can stay together. Para jugar, to play. In the park. En el parque, al football. In the park, to play football. Is it clear to you? समझ आ रहा है आपको? Su deporte favorito. Deporte होता है sports. Their favorite, your favorite sports. Su Okay. deporte होता है sports. Su deporte favorito, your favorite sports. Su mesa होता है table. Mesa क्या होता है हार्दिक? Table. Su mesa está junto a la de Marcos. His table junto a la de. Junto a la de is just next to के लिए हम यूज करते हैं. Next to ये बहुत इंपॉर्टेंट vocab है हार्दिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको बहुत पढ़ना पड़ेगा इस वाली vocab को. Su mesa. His table. देखो session is under recording. Don't worry. उसको देखना है. Okay. Okay. Está junto. His table is junto a la de. Junto a la de is junto a la de. Junto a la de. बोलो junto a la de is just next to. हम बोलो is just next to junto a la de. बोलो junto a la de. Junto a la de. Marcos. वो कह रहे हैं कि his table is just next to the Marcos. Isu mochila. Mochila कहता है backpack. जो आपका backpack होता है ना, जो आप पीछे बैग टांगते हो. That is mochila. Es muy parecida. Is very very similar. वो कह रहा है उसका बैग भी बड़ा सिमिलर था. आलादे दे मार्कोस टू द मार्कोस. मतलब दोनों में इतनी सिमिलरिटी है. उसका टेबल जो सिर्फ वो साथ लगा होता है, उसका जो मोचीला जो बैग है वो भी बड़ा सिमिलर है. सिमिलर. पारेसीदा. इज इट क्लियर टू यू? Yes, auntie. इसको एक बार इस पैराग्राफ को दोबारा रिवाइज, इसको दोबारा रीड ऑन करो आप. तो देखो इसमें क्या समझ आ रहा है आपको. Hoy es día de clase como todas las mañanas, Marcos se Mañanas. mañanas, Marcos se levante con su hino. Hoy tiene clase de matemáticas, inglés, tiene se viste, desayuna y como comienza el camino hacia la escuela. Se encuentra con su, sorry. Very good. Con su amigo Pablo. Los dos van juntos a clase desde que eran peregrinos y siempre que cuidan para jugar en el parque al fútbol. Su deporte favorito. Su mesa está junto a la de Marcos y su mochila es muy parecida a la de Marcos. Is it clear to you? समझ आ रहा है आपको? Yes. Okay, cuando llegan el profesor. Cuando llegar is my verb to arrive. llegar is my verb to arrive है हार्दिक. ये गान जो है क्योंकि they arrive. Plural है ये, plural. When they arrive, el profesor, when they arrive the teacher, y ya está esperando. Already waiting. देखो बहुत ध्यान से समझना. Cuando llegan, when they arrive, el profesor ya is already ya está esperando. Esperar verb हमारी हार्दिक लिख लो. Esperar. Esperar is the verb to wait. Esperar. I'm saying cuando llegan, when they arrive, el profesor y está esperando. The teacher is already waiting. Is it clear to you? Yes. Se sientan en su silla rápido. It means sientan.
sientan, they sit En su in the silla chair very rápido fastly. y जैसे आप जब लेट पहुंचोगे फटाफट चेयर पे बैठ जाते हो. So se sientan, they sit. En su silla rápido, they sit in the chair very fastly. Is it clear to you? yes, Y sacan, take out. Sacar, we have verb sacar, S-A-C-A-R, take out, and take out the book. El libro, y sacan el libro, and take out the book. El papel, the paper. El lápiz, the pencil. Y la regla, and the, scale, rules. जो scale होता है आपका regla. Clear हुआ हार्दिक? yes, El profesor ha indicado, the professor has indicated, ha indicado un ejercicio, exercises, exercise ejercicio, que, that, tienen que hacer, that they have to do, tienen que, they have to do, tienen que, tengo que, I have to do. देखो ये मेरा ना, tener का conjugation के साथ अगर आप के लगाओगे तो have to बन जाता है. मैं वो मुझे काम करना ही है, tengo que, मुझे I have to, okay. तुम्हें करना you have to, okay, तो I will say tienes, tú tienes, tienes que. Is it clear to okay, you? Is it clear to you? So el yes, profesor ha indicado un ejercicio que tienen que hacer. It means the professor has indicated. El profesor, the teacher, ha indicado, has indicated un ejercicio, an exercises, an exercise que tienen que, that they have to do, hacer, is a verb to do. समझ आ रहा है आपको? ये समझ आया आपको? El professor वाला. नहीं ये वाला नहीं समझ आया मुझे. El professor क्या होता है? टीचर. क्लियर? ठीक है, ठीक है, El professor क्या होता है? टीचर. प्रोफेसर. क्लियर? yes, professor teacher, प्रोफेसर. प्रोफेसर क्या el होता है? professor, टीचर. Is it clear to you? प्रोफेसर. yes, क्लियर हो रहा है आपको? yes, अब वो क्या कह रहा है? El professor, the teacher. समझ आया आपको? टीचर. yes, has indicado, okay, indicated, we have indicar, indicate करना. yes, ठीक है? yes, Indicado has indicated un ejercicio, an exercise, un okay, que, that, que is that, tienen que hacer, tienen que, you know what is tienen que? जैसे मैंने पहला सुनाया था, tener verb के साथ अगर आप के लगाओगे ना, tener के साथ के, जैसे what is tener verb? yo tengo, tú tienes. हाँ तो पिछला पूरा रिवाइज करोगे ना आप, जैसे हमने yes, tener verb करी थी, tener verb, yo tengo, tú tienes, yes, 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 él, ella yes, tiene. अब tengo के साथ के लगा दोगे, के क्यू यू ई yes, के, समझो मेरी बात को, तो बन जाएगा I have to. I tienes, have to, tienes के, tú tienes होता है, tú tienes, पूरी कॉन्जुगेशन है ना, yes, tienes की क्लैप. सो tú tienes yes, के लगाओगे तो you have to हो जाएगा, you tienes que, you have to. él, ella tiene, he, she has to. Nosotros tenemos que, it means we have to. समझ आ रहा है आपको? tienen que, tenéis que, tienen que, tenéis que, yes, अब tienen que, they have to do. hacer is a verb to do. मेरे को they have to do, उन्हें करना ही है, तो आप tener yes, के लगा दोगे, that is they have to बनेगा. अगर to do is my hacer. Is it clear to you? Tell me. yes. Tener que means they have to, na? Yes, yes. So tener verb के साथ आप के लगा दोगे, tener की conjugation के साथ, तो बनेगा have. Yes, Is it clear to you? अब okay. ये बनाओ, I have to क्या बनाओगे? I have to. I have to go. tengo वो के, बनेगा tengo के, tengo क्योंकि que, tengo के, क्योंकि tener verb क्या है? yo tengo, tengo के. Is it clear? yes, 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 Is it clear to you? Clear? yes, yes. El I single है और वो I की जगह वहाँ पर सिंगल वर्ड आया ना, तो टेंगो हो गया वो सिंगल रोड. tengo que, क्लियर? Yes, अब देखो क्या कह रहा है, el profesor ha indicado un ejercicio que tienen que hacer. ये क्या बना? The professor has indicated
an exercise, ejercicio, que tienen, that they have to do. One K is that, K, tienen que is they have to do, hacer. Es un ejercicio complicado. It is a complicated exercises. Is it clear to you? Yes. Clear? इसको एक बार read on करो आप please. Cuando llegan el el profesor ya está esperando, se sientan en su silla rápido y sacan el libro, el papel, el lápiz y la regla. El profesor indicó un ejercicio que tienen que hacer. Clear? अब कह रहे cuando todos los alumnos, cuando is when, cuando is when, todos is all, todos all, los alumnos, alumnos क्या होता है? The students. Is it clear to you? Students, alumnos. Están pensando, Hardik, we have verb pensar. हमने जो किया था verb pensar is to think. Pensar. P-E-N, pen down please. Pensar. P-E-N-S-A-R. Pensar. I'm saying cuando todos, when all the students, los alumnos, están pensando, they are thinking. Están pensando, they are thinking in an ejercicio about the exercise. Llega el director de la escuela con un alumno junto a él. Very important. What is saying? Cuando todos, when all the students están pensando, they are thinking en el ejercicio, in the exercise, okay? Llega el director. Llega el director de escuela. It means llega, llegar verb is my verb to arrive, but llega el director director de la escuela, director de la escuela. It means the school principal arrives. Director de la escuela, school director, school principal arrives, llega con un alumno, with a student, junto a él, next to him. Junto is together, but junto a él, next to him. तो क्या कह रहा है? Cuando todos los, when all the students they are thinking in the exercises, the school principal एकदम से arrive हुआ with the student next to him. Is it clear to you? Tell me yes or no. Yes. So, bueno, cuando todos los alumnos están pensando en el ejercicio, llega el director de la escuela con un alumno junto a él. Cuando todos los alumnos están pensando en el ejercicio, llega el director de la escuela con un alumno junto a él. Yes. Is it clear to you? Clear? Yes. Then, the next we have is un nuevo compañero de clase. He is a new classmate. Compañero, we have a classmate. Compañero is my mate de la clase, de clase, classmate. Es un nuevo होता है new. He is a new classmate. Estudiar, study, you will study. Estudiar, Hardik, estudiar, you will study. So, estudiar con Marcos, you will study with Marcos, Pablo, y el resto de la clase, and rest of the class. Is it clear to you? Yes. Clear हो रहा है आपको? Yes. Como no hay ninguna mesa, it means since. Como no hay, as there is I क्या होता है? H-A-Y, there is and there are. तो कह रहा है as there is no ninguna mesa, कोई भी ninguna होता है no, कोई भी टेबल खाली नहीं थी. Vacía. Ninguna means no. No, कोई भी no, ninguna no table, mesa,
Vacia el nuevo alumno. कोई भी vacía is empty, no table empty. The new student से coloca is placed. Colocar एक मेरा verb है. Coloca is placed in el escritorio. In el escritorio हमारा होता है desk. The student is placed on the desk del profesor from the teacher. Hasta que, until, hasta que, until, hasta que use करो until, hasta que, until, le traigan मेरा होता है bring, traigan, la traigan, to लेके आना, bring, ये देखो बहुत important vocabularies हैं, traigan, bring, su mesa, your table. अब वो क्या कह रहा है बेसिक? वो कह रहा है como no hay ninguna mesa vacía, el nuevo alumno se coloca en el escritorio del profesor hasta que la traigan su mesa. तो इसको समझो पहले इस पूरी वो क्या आपको como no hay as there is no, como no hay बोलो como no hay बोलो como no hay ninguna mesa as there is no table. Vacía होता है nuevo alumno se coloca nuevo, the new student, new alumno, तो क्या हो गया new student, nuevo new student se coloca is placed in an escritorio on the desk. Escritorio होता है आपका desk del professor from the teacher until hasta que until it brings you le traigan su mesa, your table. Is it clear to you? Yes. Es divertido क्या होता है fun, funny, you know. Divertido आपको होता है entertainment, fun, divertido, लिख लो divertido. Es divertido verlo en ese lugar. It is fun where, Hardik, ver, where is my preposition to see, where is my preposition to see, where verb, sorry, where is a verb to see, where low to see him, where low उसे देख लो, ये मेरा ना कुछ चीजें हैं, where low to see him. Es divertido, it is very funny to see him. Es divertido verlo en ese lugar, to see him in that place. Is it clear to you? Yes. Detrás del escritorio, behind the, detrás the behind. Detrás क्या होता है? Detrás behind. Del is behind the desk. Escritorio हमारा था desk जिसमें हम बैठते हैं. Yes. Otro profesor más, like another teacher. Como otro profesor, like other teacher. Más is my more, like more the other teacher. Como otro, like otro other, professor, teacher, más is more. Is it clear to you, Hardik? Yes. Is it clear to you? ये हैवी तो नहीं हो रहा आपको? समझ आ रहा है सारा? हार्दिक समझ आ रहा है? Hello. हार्दिक समझ आ रहा है आपको? Hello. वॉइस आ रही है आपको? हार्दिक, can you hear me? हेलो. हाँ जी फराद भाई, हाय, हाउ आर यू? बस बढ़िया यार. कोई बात नहीं फराद भाई, सेशन पूरा रिकॉर्डिंग पे है, मैं आपसे शेयर नो इश्यूज यार. मैं एक्चुअली ड्राइव कर रहा था. मैं बाहर हूँ, चंडीगढ़ में नहीं हूँ. अच्छा, चंडीगढ़ नहीं हो? कहाँ गए हो आप? यार मैं यूपी में आया हूँ, देवबंद में ना. कहाँ? क्यूबा, हवाना? नहीं, देवबंद यूपी. अच्छा, यूपी में आप हो, कोई बात नहीं. रिकॉर्डिंग सेशन अंडर रिकॉर्डिंग है, नो प्रॉब्लम. इट्स ओके यार, इट्स ओके. हार्दिक. Yes. Okay, now next paragraph we have la clase de arte. La clase de arte है basically, you know, you have the art class. Clase de arte is la favorita de Marcos. Okay, art class is a favorite, Marcos your favorite class. Puedo, he can. Okay. हमने करा ना फराद भाई, poder verb puedo. हाँ
Yeah. Dibujar. Dibujar is a verb to draw. Dibujar. He can draw. He can draw cosas bonitas. Matlab nice things. Bonitas. Cosas. Beautiful things. Is it clear to you? Yes. Mm. Y la hora pasa muy rápido. And the hour, hora होता है आपका hours. And the hours Yes. by pass जो बीत रहे हैं. Muy rápido, very fast. Muy rápido. Is it clear to you? Muy rápido, very fast. हाँ, muy is very rápido, is fast. Yeah, fast. Yeah. Time बहुत fast बीत रहा है. Hora pasa. Muy Hora pasa, muy rápido. rápido. Is it clear to you? Is it cleer to you? Yeah. Hoy ha dibujado un caballo. मतलब today hoy ha dibujado. Hoy ha dibujado. So today has drawn किया un caballo. Caballo क्या होता है आपका horse. Caballo. Is it clear to you? Yes. Le ha quedado muy bien. बोलो le ha quedado muy bien. बोलो Le ha quedado muy bien. Le ha quedado muy bien. उसका मतलब क्या है? Very well. Has been very well. Has been very well. He quedado muy bien. बोलो he quedado muy bien. Has been very very well. Quedado is Le ha quedado has been. Has been quedado. Well, that's super very well. Is it clear to you? Quedado, quedar is a verb, right? To stay, yes. Quedado. But वो कह रहा है कि that stayed, that has stayed looks very, मतलब वो कह रहा है कि जो उसने बनाई है, मतलब वो बहुत beautiful लग रही है. Is it clear to you? Okay. Okay. So cuando termina las clases, Pablo, when the class ends, cuando terminan, when last classes, Pablo, जब Pablo class end हुआ, is it clear to you? Clear? Yes. Y and él se van juntos a casa, and he goes home together. Se van juntos together. Juntos. Y él. Juntos means together. Together. Juntos. Y and él, he se van. He goes home together. Is it clear to you? Casa. Casa is my house. Is it house, clear? yeah. समझ आ रहा है हार्दिक आपको? And then can say and suentran. En el camino se encuentran, मतलब on the way, en el camino. Camino होता है रास्ता, way. रास्ता. करूँ en el camino, on the way. Encuentran. It means they meet. Con el alumno nuevo. मतलब क्या है? They meet with the new friends, new classmates. Is it clear to you? समझ आ रहा है हार्दिक? Yes. Hablan un poco con él. They talk a bit with him. Hablan un poco. Poco a little bit. They talk a bit with him. Con él. With him. Hablan. They talk un poco con él. Is it clear to you? Se llama Andrew. His name is Andrew. Y and es de Estados Unidos. And he's from United States. Estados, este. Yo soy. Este. He's from United States. Se llama Andrew desde Estados Unidos, United States, yeah. Este. Es un chico simpático. He's a very nice guy. Nice guy. Boy. Simpático means nice. Simple. Yes. Chico होता है boy. Boy. Es un chico. He's a nice boy. Pablo y Marcos les gustaría que. Pablo and Marco would like. Gustaría. Would like. Gustaría. Would like. Yeah. Gustaría. Gustar verb is to like. Hardik. Clear word. Gustar. Gustar is a verb like. Gustaría. हम RIA लगाते हैं would के लिए. I will explain to you. अभी आप इसको पढ़ोगे तो you come to know. हम जो verbs करेंगे would की तो you come to know. So Pablo y Marcos les gustaría. मतलब Pablos and Marcos would like them. Que pusieran la nueva mesa. Pusieran. Put. You know, pusieran. To put the nueva mesa de Andrew. They put the Andrew's
न्यू मेसा cerca de la suya. cerca क्या होता है? cerca is close, close, very near. cerca de la suya, suya होता है yours, suya, close to yours. Suya is your one, यहाँ पे your one. तो सूर्य, ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिएटर था हमारा। हार्दिक, लग रहा है कि अगर ये वो कैब आपको टिप्स हो जाए अगर, so you can do like wonder something, tell me. Yes. क्योंकि ये जो वो कैब है इसमें जैसे हमने वो तेनेर वर्ब है हमारी, इसमें हमारी केदार वर्ब है, इसमें क्लियर आसेर वर्ब है, आसेर वर्ब है हमारी, एस्टुडियार वर्ब है हमारी, वे लोड ऑफ वर्ब्स ओवर हियर, एस्पेरार, वेट, एस्पेरांडो, से क्लैर। सो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके सामने ये सेशन पूरा मैंने रिकॉर्डिंग में किया है। अब आई विल डू वन थिंग, मैं आपसे इसका रिकॉर्डिंग अभी नेक्स्ट 10 मिनट में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इसको देखो और अपना मुझे आई नीड योर वॉइस रिकॉर्डिंग। देखो मैं आपको अब टास्क देना शुरू कर रहा हूँ। यू वॉच द रिकॉर्डिंग बट आई विल शेयर विद यू। अभी जो आपसे मैं रिकॉर्डिंग आपसे मैं जो शेयर करूंगा आपको देखनी है। And your task क्या है? You have to submit your voice recording in my WhatsApp, entire transcription. Can you do that? Hello. Okay. Done. Clear? So I'm just going to give me 10 minutes time. Let me share the recording. Clear? And you have to watch this again and again and submit your voice recording. और ऐसे नहीं submit करनी। Hoy es día de clase como todas las mañanas. ये ऐसे नहीं, ना। आपको मुझे समझाना भी है। Hoy es día de clase, hoy is today, ऐसे बोलना है, es día de clase, today is the class day, como todas las mañanas, like all the morning, ऐसे करके समझाना है आपको, so that you will come to know vocab also. Say clear. Is it clear to you? Perfecto. Okay. Vale, ठीक है. Now, what I can do is, I'm going to share a recording. Watch this and submit your voice recording like this. Is it clear to you? ठीक है हार्दिक, तभी तो एक लेवल मेंटेन होगा ना। आपको पढ़ के नहीं मेरा अपना वॉइस, मैं बार बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट यू टू रीड इट कि cuando llegan el profesor y está esperando, no, आपको एक्सप्लेन करना cuando llegan, when they arrive, el profesor, the professor y está already está esperando, वो वेट कर रहा था इसका, he was waiting, esperando, esperar, आप बताओगे esperar भी a verb to wait, esperar. Is it clear to you? Tell me. Okay. ऐसे I need your voice recording. Is it clear to you? ये भेजनी है आपको. See. Perfect क्या? See? Okay. मुझे भेजो so that कि आप एक लेवल मेंटेन हो. फिर कल हम इसी को कुछ और रिफाइन करेंगे. Clear? Okay? See. चलो. Okay. Adios. Gracias. Adios.